Let us see the next question. Mrs. Reliance Limited, an Indian company, has exported goods on 1st of January to Mrs. Micky Incorporation UK. Mrs. Micky Incorporation has agreed to make the payment for the consignment on 31st of March. Payment is to be made of pound 55,000. You are required to answer following questions. We have been provided with say 4 questions over here. I request all of you to go through the question, फिर हम लोग डिस्कस करते कि कैसे करने का. You don't have to write anything, पहले डिस्कस करेंगे. Please go through the question. अभी हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे. Reliance Limited, an Indian company, has exported goods. तो एक इंडियन कंपनी ने गुड्स एक्सपोर्ट किया है टू मेसर्स मिकी इनकॉर्पोरेशन, अ यूके कंपनी. क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है दैट से कंसिडरेशन इज से 55,000 यूके पाउंड जो रिलायंस कंपनी को मिलने वाला है. यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन ये पूछा है दैट हु इज एक्सपोज्ड टू फॉरेन एक्सचेंज रिस्क. तो कौन सा कंपनी को फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है? इज इट रिलायंस और मिकी? Please write the answer in the chat box. So the answer for the question is that it is the Reliance company. आपको कुछ लिखना नहीं है, पहले समझ लेते हैं. सर क्यों Reliance company? Because the consideration is in pound currency and pound currency is foreign currency for the Indian company. तो पहला क्वेश्चन ये होगा, पहले क्वेश्चन का आंसर ये होगा that Reliance company is exposed to foreign exchange risk. दूसरा क्वेश्चन ये है दैट एक्सप्लेन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एज वन ऑफ द टूल फॉर हेजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिस्क. दैट इज अ क्वेश्चन. तो ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर मुझे आपको समझाना पड़ेगा. फ्रेंड्स कुछ ऐसा है कि आज का डेट है 1st ऑफ जनवरी. ऑन 31st ऑफ मार्च हमको कंसिडरेशन मिलने वाला है. कितना मिलने वाला है? 55,000 यूके पाउंड. वी अंडरस्टैंड एट से 3 महीने के बाद ये पाउंड है उसको हमें रुपीज टर्म में कन्वर्ट करना है. उस दिन का रेट क्या होगा उसके लिए क्या है? अनसर्टेनिटी है. तो वो मैं अनसर्टेनिटी को क्या कर सकता हूं? मैं एलिमिनेट कर सकता हूं बाय एंटरिंग इनटू अ डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन. देयर आर नंबर ऑफ डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस. दिस इज वन ऑफ द डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन. इसमें क्या किया जाएगा फ्रेंड्स? लिसन केयरफुली. ऑन 1st ऑफ जनवरी a forward contract will be entered upon for 31st of March. क्या बोला सर आपने? On 1st of January a forward contract will be entered upon for 31st of March. The forward contract will be for conversion of the pound into rupees. That is the forward contract. यानी 1st of January को ही आपको ये बताया जाएगा कि 31st of March को आपको कौन से रेट से कन्वर्जन मिलेगा. In a way that the Reliance company can enter into this kind of contract with a bank, जिसमें से the Reliance company को एक fixed rate मिलेगा, and at that fixed rate the conversion will take place. उस दिन का रेट उससे ज्यादा है या उस दिन का रेट उससे कम है, उससे कोई मतलब नहीं है. Once you enter into the forward contract, there will be a fixed rate at which the conversion will take place. उसको बोला जाता है forward contract. This is the very first derivative transactions that we are discussing. आपको कुछ लिखना नहीं है, पहले समझ लेते हैं. If the spot exchange rate is 92 rupees per pound, यानी आज का एक्सचेंज रेट हमको क्वेश्चन में दे रखा है, and the forward exchange rate is 94 rupees per pound, then which rate should be used by Reliance Limited for hedging the transaction? Then of course friends we understand that say जो forward exchange rate का information दे रखा है उसका इस्तेमाल करना है for the purpose of hedging. ये हमको जो spot exchange rate का information दे रखा है उसका कोई यूज नहीं है for the purpose of hedging. जो forward exchange rate है उसका यूज करना है for the purpose of hedging. So answer for the third question would be 93/94 rupees per pound.
I want somebody of you to give answer for the fourth part of the question in the chat box. How much Messrs Reliance Limited will receive on 31st of March? Highlight the portion. If forward contract had been entered upon on 1st of January. Further, spot exchange rate on 31st of March is 95.96 rupees per pound. I request you to give answer for the fourth question in the chat box. So let us have understanding कि कैसे किया जाएगा इसका आंसर. देखो फ्रेंड्स, ये फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन हमको मिसगाइड करने को दे रखा है. वी अंडरस्टैंड एट से द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी एंटर हो चुका है और ये फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट हमारे लिए रेलेवेंट है. कौन सा फ्रेंड्स? 93/94 रुपीज पर पाउंड. हमको कंसिडरेशन पाउंड करेंसी टर्म में मिला है, तो हमको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स? हमको एक पाउंड के सामने कम रुपीस मिलेगा, यानी क्या मिलेगा? 93. और कंसिडरेशन कितना अमाउंट का है फ्रेंड्स? 55,000. सो फाइनल आंसर इज 51,15,000. Let us write down answer of the question. Heading right down forward contract. Because in this question we are going to have understanding of the forward contract. चलो उस पर लिखो. Now वन बाय वन आंसर भी लिखेंगे और ये कॉन्सेप्ट भी समझते जाएंगे. पहला क्वेश्चन ये पूछा है, हु इज एक्सपोज टू फॉरेन एक्सचेंज रिस्क. उस पर लिखो, एज कंसिडरेशन is in pound currency, so Reliance company is exposed to foreign exchange risk. That is answer of the first question. Second question में ये पूछा है, explain forward contract as one of the tool for hedging the foreign exchange risk. Heading right down, explanation of forward contract. उसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट, रिलायंस कंपनी can enter into one of the derivative transaction forward contract to hedge foreign exchange risk. Second point, in forward contract two parties are bound to one another for exchange
of underlying asset at a fixed price. Full stop. Third, once forward contract is entered upon, definitely, so comma, definitely consideration will be equal to forward price. Full stop. Fourth point, by entering into forward contract, foreign exchange risk is completely eliminated. Full stop. थर्ड क्वेश्चन में ये पूछा है कि स्पॉट एक्सचेंज रेट ये है और फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट ये है, तो कौन सा रेट यूज होगा फॉर द पर्पस ऑफ हेजिंग? सो राइट एन आंसर फॉर द थर्ड क्वेश्चन. For the purpose of hedging, comma, forward exchange rate (93/94) rupees per pound will be used. Full stop. उसी में लिखो आगे. This rate is prevailing on 1st of January for 31st of March. यानी 1 जनवरी को 31st ऑफ मार्च के लिए ये रेट चल रहा है, ऐसा हमको समझना है. फ्रेंड्स, ये रेट कैसे डिसाइड किया जाता है उसके लिए वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड से थियोरी विच इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम, एंड so there is a theory called purchasing power parity theorem. ये थियोरी कैसे काम करता है वो हम लोग ग्रेजुअली लर्न करेंगे, बट दिस इज व्हाट से वी आर गोइंग टू हैव द लर्निंग. Fourth question, how much Mrs. Reliance Ltd will receive on 31st of March if the forward contract had been entered upon on 1st of January? For the spot rate on 31st of March is so and so. चलो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर लिखो. Spot exchange rate information. Spot exchange rate information on 31st of March is surely irrelevant. Full stop.
Since forward contract is entered upon, comma, forward exchange rate will be used for conversion, full stop. अभी हम लोग आंसर कैलकुलेट करते हैं. It is 93/94 रुपीस पर पाउंड. तो जैसे हम लोग एज यूजुअल करते हैं, वी ड्रॉ अ लाइन इन बिटवीन, फिर हम लोग लिखेंगे पेप्सी सोसियो, सोसियो पेप्सी, रुपीस पाउंड, रुपीस पाउंड, ऐसा हम लोग लिखेंगे. अच्छा, ट्रांजैक्शन क्या है हमारा? ट्रांजैक्शन है कन्वर्जन ऑफ द पाउंड इनटू रुपीस. ये हमारा ट्रांजैक्शन. हमको क्या मिलने वाला है? 55,000 पाउंड मिलने वाले हैं. So this is the amount of the rupees say that we are going to receive. So conversion of the pound into rupees में इतना rupees मिलेगा हमको. So we understand it is a rupees and pound. 93 rupees per pound. So how much amount of the rupees for 55,000 pound? So final answer will be 93 into 55,000 divided by 1. So final answer would be 51,15,000. यानी इतना रुपीस मिलेगा रिलायंस कंपनी को ऑन 31st of March. ऐसा हम लोग समझते हैं. So let us have a summary of the entire answer. क्वेश्चन में हमको ऐसा दे रखा है that the consideration is in UK pound term. So we understand that the Indian company is exposed to foreign exchange risk. That is for the first answer. Second question में forward contract जो बहुत ही important है, it is very 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 important part of your curriculum, वो हमने समझा. जिसमें क्या होगा? It is one of the derivative transaction in which say there are two parties who are associated with the transaction. One is going to buy the underlying asset, another is going to sell the underlying asset. उन दोनों के बीच में transaction होगा and say it will take place at a predetermined rate. Once you enter into the forward contract, then in that case absolutely foreign exchange risk आपका nullify हो जाएगा. That is what we understand. So what will happen? You will be having say the a fixed rate at which the conversion will take place. Third question में ये पूछा है that say कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा? तो 1st of January को जो 31st of March को प्रिवेल कर रहा है ना, वो रेट एप्लीकेबल होगा 93.94. फिर 31st of March का हमको स्पॉट रेट दे रखा है भाई, पर उसका कोई काम नहीं है हमको. क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर दिया है. सो वी आर गोइंग टू रिसीव द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ 51,15,000. आई वांट यू टू राइट इन द चैट बॉक्स, आपको क्या लग रहा है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की वजह से क्या रिलायंस कंपनी को फायदा हुआ या नुकसान हुआ? प्लीज राइट आंसर इन द चैट बॉक्स. फ्रेंड्स, ओवर हियर हम लोग यहाँ पे ऐसा समझ सकते हैं कि सीन्स फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड अपॉन, हमको 1 पाउंड का कितना मिलता है? 93. अगर हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया होता तो हमको 1 पाउंड का कितना मिलता फ्रेंड्स? हमको 1 पाउंड का 95 मिलता. सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की वजह से आपका रिस्क एलिमिनेट हो जाता है, बट ऐसा जरूरी नहीं कि आपको फायदा ही होगा. एंटरिंग इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मे बी अ लॉस मेकिंग transaction for you, and say the things might have turned otherwise in a way that say
ये जो वाला जो रेट है, ये वाला जो रेट है, इट मे बी लेस देन 93 रुपीज पर पाउंड। तो उस केस में जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हमने एंटर किया है, से दैट मे टर्न टू बी प्रॉफिटेबल फॉर अस, यानी कि हमारा ये जो कॉन्ट्रैक्ट है से उसमें हमको फायदा होगा या नुकसान होगा, वो उस दिन के एक्सचेंज रेट के ऊपर डिपेंड करता है। जस्ट राइट ऑन अ जनरल नोट, entering into a forward contract may be profitable, comma, it may not be, it depends upon spot exchange rate prevailing on 31st of March. तो whether it would be profitable or not, it depends कि उस दिन का एक्सचेंज रेट क्या है, कौन से दिन, 31st ऑफ मार्च का। तो हम लोग ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की वजह से आपका फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है ना, वो नलीफाई हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है, पर उसकी वजह से क्या हमको हमेशा फायदा ही होगा? तो भाई उसका आंसर है ना, फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, वो लास्ट डे के एक्सचेंज रेट के ऊपर डिपेंड करता है।